Okay. So now I'm just going to reveal the topic. Okay. Copy pen ले रखा है आप सभी ने? Yes, ma'am. Okay. Okay. So note down the topic. The topic is how the present examination system badly affecting the education system. How the present examination system badly affecting the education system. सभी को clear है topic? Okay. So it's 2:38 by my side. I'm giving you 3 minutes of time. Note down your points, and who'll start? Who'll start with the introduction? Ma'am, I will start. Ma'am. Shubham Sani. Okay, Shubham, you will start, Yes, and who will conclude? I think किसी और ने भी बोला था start करने के लिए. Anand. Okay. So Shubham will start, and Anand will conclude. Okay. Now note down your points, and we will start with the Shubham at 2:41. Okay. Ma'am, the topic was how present examination system badly affect present the education system. Affecting. Yeah. Ma'am, it's badly or barely? Badly. Badly. Yeah. Okay. Yeah. So we are done with the points. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Start, Shubham. Good afternoon, friend. I am Shubham Sani. I am glad that I got the opportunity to start today's discussion. And today's our topic is for the group discussion is how present examination system badly affecting present examination system. So I believe this topic is very important for of us, for the society also. And I believe I believe that it's create a very how examination system is presently affecting the education system is it's create bookworms and it's create pressure on children's, and also there is no critical and creative thinking remains children's, and also it's create very competitive environment, not a very healthy environment in the society. So this is my topic. This is my points, and also I invite you all to participate in this group discussion and I give your agree valuable with points. what Yeah, so Shubham I has completely- just said. I think present examination system is mainly focuses on the rote learning, and they don't focus on the employment related skills, the application of mind which is required in the industries. So in my opinion, we need some changes in the present examination system. It is not good for. I think that there is a lack of flexibility in the present examination system. Why? Because there is nothing related to critical thinking.
decision making or any practical thing that is utmost required in the मतलब जैसे हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं तो उस चीज में ये सब चीजें की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो वो सब चीज में लैक करता है. तो आई कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम. Okay, just like my friend Subham just said and Ankit also said कि जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, वो मोस्टली बुकवर्म्स क्रिएट कर रहा है. लाइक प्रैक्टिकल थिंकिंग्स और क्रिएटिव थिंकिंग ये सब नहीं रह गया है. Also, one more thing that I want to add is the pressure that they are creating in front of students. Like from the school days only, we see that they are having Monday test like every other week. So the kids only from 6th to 7th class, they are having Monday test like every week. And in colleges also, we see that if a semester is of 4 months only, in that only we have one mid-sem and one end-sem. Like we don't even get enough time for extracurricular activities or to do the club works and all. So that was my point. Yes, I agree with our friend's point. And also mainly our semester syllabus that will not related with the market demanded skills. In the outside, when you come to the job, we are not see this much of theory. And in one of the example, Infosys founder R.K. Naramurthy says, if one problem is given from the textbook, 95% of Indian engineers will do it. But if you are out of the textbook, one problem is given, only 5% engineers will do. So in the international market, this is the problem. And one more thing is, we have only theory-based certificates. There is no skill-based courses in our education. And one more thing is, the old courses like Bachelor of Arts. In that course also, today it will also run. But when I come out of that, there is good jobs for that scope. I think that the present examination system is badly affecting us as an individual because वो हमें अपने full potential तक जाने में मदद नहीं कर रहा. We are not able to like analyze what is our full potential, कहाँ तक हम सोच सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं. तो I think that is also one of the point that I can relate to. Yes, I completely agree. I want to add one more point. जो nowadays जो exam system का जा रहा है वो mostly जो objective exams oriented होता जा रहा है. Subjective exams जो है वो खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे. क्योंकि कोर इतना कॉपी चेक करे, कोर इतना मार्किंग करे, तो वो एक स्किल्स के लिए थोड़ा डिमेरिट्स आ गए. I want I to think we are also just like doing Ajay many said, unnecessary related things point about अगर present बच्चे education. ज्यादा said होंगे कि तो सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है और उसमें एक बायसनेस भी होता है कि टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि मार्किंग सिस्टम कैसा है. और आई थिंक दैट एमसीक्यू इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन एज कंपेयर टू जब मेरे पास सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा है बच्चों का, सो वी कांट गो फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स इन दैट. Also, in my opinion, we are also doing many unnecessary things in evaluating our students in present system of education. Like we are making piles of education, piles of practical files every year without any use. I think after 1 year, they are of no use, of course. And people who are writing those practical files are not having enough amount of practical knowledge as they have written in those practical files. So we should more focus on the real things and the practical things rather than just written and reading part. Yeah, I agree. Yes, I would also like to add a point regarding the जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो सीधी फॉर्मेलिटी सी होती है, तो फाइलें बना लेते हैं, सीधे सबमिट कर लेते हैं, प्रैक्टिकली कुछ कराते नहीं है, मार्क्स दे देते हैं या फिर ये सब होता है. या वही बात है, थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, प्रैक्टिकल बेस्ड कम है. जैसे अभी जस्ट अजय ने बोला कि जो टेस्ट भी हो रहा है या जो सब्जेक्टिव टेस्ट वो सब है, वो ज्यादा डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि टीचर का मूड कैसा है. इट्स लाइक कि इफ यू नो व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इन द कॉलेज, यू कैन इजीली पास दैट एग्जाम. पीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ना कि उस सब्जेक्ट पे. सब्जेक्टिव नॉलेज कम है. व्हाट दे थिंक इज ओके, लास्ट नाइट just 1 or 2 days before, what we can do is just mug up what were the previous year examples or the questions, and then we can easily obviously actually kills the creative thinking also, and the creative thinking are really important. Hi, I would also like to add a point, like examinations are a really important part of the evaluation of the student.
but the problem is how the examination is getting conducted. Most of the examinations are now based on the result only. So rather than focusing on the overall development of the student, the focus is only entirely being on the result only, because it has become like a business. So in the corporate era, now the business to be earned means the result should be high. So the focus is entirely on how to create result. So when the focus is being diverted from the overall knowledge creation of the student, or the overall management of the student, this becomes a huge problem. That is one of the major factors that is affecting the present system. Yeah, obviously, Yeah. I agree with you. I think the whole examination, if we take an example of any competitive exam, is based on a factual data, not a valuable data. It's only on a factual data, and it's killing the creative thinking and critical thinking in children. Like, we know that all children are different, so and they have a different potential in them, but we examine with the same parameter of every children. So it's very bad for the country and bad for the innovation, because there is no innovation also with this examination system. We see only bookworms in our society, not an innovative person. So this is also a very I agree I with you, should add Shubham. one I more just point. I want to add a new dimension to this discussion. Like, how does society affect? Society comes into all this. See, what the present examination system, it's like that. It's very competitive, right? If you are preparing for, suppose you are preparing for UPSC or even GATE, for any these kind of examination, what the society it does कि वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ओके, अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो और एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, यू शुड ट्राई इट, बिकॉज यही है जो कि तुमको करना है, तुम और कुछ दूसरे फील्ड्स में नहीं जा सकते हो. सोसाइटी मतलब अभी इंजीनियर है तो ये इंजीनियर का ही फील्ड में जाना है, या यूपीएससी ही करना है, या फिर मेडिकल ही करना है. कोई 2-3 ही फील्ड चूज कर लिया है. अगर वो नहीं करे तो सोसाइटी मतलब फैमिली भी प्रेशर देते हैं, सोसाइटी भी प्रेशर देते हैं, पीयर प्रेशर भी रहता है. Yes, because with this, if we compare India's engineer and Germany's engineer, there's a lots of difference, because they work on a skill based. Skill based, like they focus on a very important on skill. So I think this is the very big problem in our country also, because we are not focusing on skill, we are just focusing on what theory says and what degree. We are just Yes. dependent on degree and not on skill. Just pass. I should add one more point also. In our school educations, most of the time we are from 4th standard onwards, we are only trying for IITs, but we don't concentrate on other skills, like only focusing on how to crack IIT. Mainly these competitive exams. In that time, most of the children missing other activities. Yeah, वही जैसे राजू ने बोला, वही सोसाइटी का प्रेशर वही है ना, कि आप यदि IIT नहीं करते तो means you are not a good student. It's like that. Exactly. If you are not preparing for IIT or NEET, then you are not a good student. ये सोसाइटी पहले से ही बना के रखा हुआ है ऐसे. Because of this, all children choosing the science stream. Not because, as we know, there's a lots of stream and lots of career path we can choose. But what we doing is all the children is choosing the science side, because it's create actually value, acceptance in the society. Yeah, in the society, acceptance in the society. You are very smart because you choose the science. And what they do that after becoming engineer, now they are starting to think that okay, अब क्या करना चाहिए? Now we choose. Yes, I think a solution to this problem. Engineer point, because I think that nowadays the intake of engineers in each and every colleges is decreasing. So I think that engineers अब engineering के तरफ लोग अब नहीं देख रहे हैं. Now it's changing. Now it's changing. Now it's changing. Yes, definitely. For like I guess 1 or 2 years after COVID, it's changing. Yes. Now let us also think about in what all ways the present examination system can be improved also. Because as we all know, it is now badly affecting the system. So one thing that comes to my mind is, instead of just being an academic evaluation, the evaluation can be of more comprehensive nature. It can include all the various sectors like extracurricular activities also.
and also your sports, Yeah. your arts talents, all the things can be, even the skill sets. Also, all these things should be included in the evaluation system. So it becomes more Yeah. comprehensive. So rather than just focusing on any competitive exam or just on academics, the evaluation becomes more inclusive in it. Yeah, like a I holistic think, development, we like have it's these there in improvements, like in new education policy of 2020. Yeah. Government has introduced these things, like we have Atal Tinkering Laboratory in many schools now. So I think improvements are happening in our country, and we are optimistic like education system will improve in the future. Yes, Yeah, even the new education policy 2020 has also included many points regarding the evaluation system also. So Yeah. those things actually point out to a better future regarding the education system in India. Yes, I should add one more point. In one interview, Abdul Kalam sir said that we have to need 2 certificates for every candidate. One is about his degree and one more certificate about his skill set. Exactly. Like most of the engineers today don't know the skill, like how to start a pump or how to start any equipment, but they know the degree. So obviously, in our college, like we do the practicals, but we don't know how. Like we know the theories, how to start the equipment and how to like run the equipment in theory, but we don't know the practical how to really start. And but if the real problem comes to in our life, so I think obviously a whole point is come to where the skill set, and obviously other curricular activities like if someone is good in playing football, to like we have to like give him or her opportunity to explore in that dimension in her career, I think. इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है कि अक्सर लड़के स्टूडेंट्स वो एग्जाम पास करने की थिंकिंग से होता है, एग्जाम पास करना है, भले ही चाहे नोट्स ना बनाए, किसी और के नोट्स लेके पढ़ लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, बस सीजीपीए ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग के लिए. Yeah. Knowledgeable. So if we make a like a small improvisation in this our education system, like we can make a very good change. Like just we have to like make a skill based curriculum of the in, and also we have to focus on skill based curriculum and extracurricular activities. Then like I think we make a very good impact on like our education system. That's what. Yeah, since we are talking about the improvements that we can make in this education system, I would like to add a point that what if the branches that we are already having, वो branch कुछ ऐसा segregate हो कि बस skill based, like okay, if you are supposed to work in and like oil sector, like if you see IOCL or ONGC, something like that, so उससे related ही अगर degree हो और उससे related ही अगर सिर्फ skill set दिया जाए, so will it be good? I think it will be. Yeah. I'm thinking like that. No, but I it will, yeah, I know that it will be more like a diploma, but degree अगर उसमें और in depth knowledge दिया जाए कि okay, इस industry में इस तरह काम होता है, तो उससे अपना भी development होगा, और जिस company में आप जाके work करने वाले हो उस पे भी आप काफी contribute कर पाओगे. Obviously, as a country, we grow. Like, why do you think we all think the China is like developed? Because they like the most research papers published by the China nowadays, because they like focus on not only on examination based system, they focus on the like skill based system, and they focus on academics. I know that the academics is very important for like every of us, but we have to segregate those people who wants to go in the academic field. Like we don't have to force them, like everyone to go in academic field and do everyone what they are doing. So obviously we have to like evaluate a person very thoroughly and give him opportunity to be good in their potential actually. But I also would like to add some of the points about the present examination system. So, but we should also see how it is being conducted, whether it is conducted in a free manner. Are there any kind of unlawful practices that are happening in the system? So, in some of the parts, we do see the instances of how the examination is getting corrupted also. So, maybe we can think about a centralized system where the entire thing is properly planned and being organized also. There is a lack of organization, as we can see in many instances. So that also should be improved.
there should be centralized control, and that should be conducted in a fair and proper way. Whatever be the systems, the education should be able to confer with the examination system. In my opinion, till 8th class, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है वो प्रॉपर साइकिल में नहीं हो पाती है, टाइम लैग रहता है या फिर लेट उससे इफेक्ट पड़ता है, स्टूडेंट्स करे नहीं या वेट करे. Ajay, you are not audible. Some amount of discipline is also necessary. Like I am talking about the positive impacts of our present exam system, because in the childhood we all are not that much disciplined to study and all things. And for history, if we don't know about history, then we don't able to think for our future also. So I think bookish knowledge is also necessary up to some extent. We should not rule out that bookish knowledge that is not at all necessary. I think obviously primary education should be compulsory for all, and there should not that much changes in that system. But after class 7th or 8th, we should have some changes in our system. Actually, there is no problem in a bookish system, like bookish knowledge. Like we have the problem with the examination system, because the examination system and evaluation system of our children is not good. Because obviously, like let's take example. We have to if we want to learn, we want to teach a child a history subject. Like we take a very good approach or an interesting approach. Like that way he can learn. Like why we have to shove it in his throat to. You have to learn it and you have to learn it. It's not a good thing. I think that's what examination system creating for right now, because we have to I want to add one more point, that the language barrier in the examination center should be removed. Because क्या होता है, बहुत लोग होता है इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते, बहुत लोग होता है हिंदी में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन हम लोग के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश जिसमें हमें एग्जाम देना है. So I think that this can be also one. Yes, and also we can see that the present education examination system is putting an unnecessary pressure or burden on the students also. That is severely affecting the mental health, that we have already seen. So a solution to this problem can be, instead of focusing on a single examination system, we can go for a multiple continuous evaluation. So that evaluation may include his performance in the college level or in the school level also, rather than be focusing on a single exam. So that it becomes more comprehensive and more useful. Yeah, and regarding your point, I want to add an example. Like when I was in college in 3rd year, I got मेरा मतलब पैर में fracture हुआ था. At that time, in spite of having a surgery, I have to go and give the examination in my college, because what my college institute said that if you don't give it, then there might be problem in future कि आपको फिर backlog हो जाएगा. अभी just उसके बाद placement आने वाले थे, placements का time. तो उस टाइम हो सकता है कंपनीज ऐसा कर दे कि इनका बैकलॉग है तो आपको बैठने ही ना दिया जाए. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्लास्टर एंड ऑल, आई हैड टू गिव इट ना. सो दैट्स द फॉल्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि वो करंट सिनेरियो देखते भी नहीं है कि आप किस रूप में जा रहे हैं. मींस even the attendance, I have to complete my attendance. It was like you have to be like 90% attendance was compulsory in my college. So you have to go in spite of having that. Even they don't consider the medical problems and all. So that is also a part which I wanted to add. I should add one more point also. In present education, we don't read some classes like 10+2. They don't read textbooks. They have called some guides, question and answer type. They frame some questions, star more questions. They do with that, and they means student missing the searching skills. If you have to read the book, you have to get some such of skills. But this question and answer booklets will also affect. ये जनरली मार्केट में वो सब अवेलेबल हो जाती है इजीली, तो लोग उसी को परचेज करते हैं, उसी को प्रिपरेशन के. Yeah. And also in a country like India with a huge population, all the exams should be highly competitive in nature. So
since we are focusing on the examination system, we have to see some of the how the privileged people are getting a upper hand over the underprivileged people in exam also. Those people, by privilege I mean people who are having privilege in terms of money, in terms of access of location, all those access of good institutes. So there is no, we can see that there is an unfairness is there. So that also should be removed. Yeah, but I think the problem is we all choose same path of a career. If we see there is a study on insect also. You can study archaeology, but no one study about that, because they think that this is a very low level career, and we don't get a very good opportunity in this. So obviously we have to educate people and be aware, let them aware to what he and she can do in other career paths. So this is also we in our exam education system, we have to include this, because you can choose any career if you want. If you are good at it, you got a very good placement or good career in your and fulfilling life also, I think. Yeah, Yes, Anand, I think conclude, please. improvements in the sector of attendance and marking scheme should be there in the present education system. There should not be a burden of attendance or getting higher marks like it is in the today's education system. And we can also improve by adding 1 or 2 subjects and by deleting some subjects. If we know that after few years, an engineer would require to operate on this this skill like programming and all, we can start it from earlier classes only, like from 5th or 6th class. In some boards of IISc in India, we have programming from 6th class only. So we can think like that to improve our education. Anand, conclude, please. Okay. So, dear friends, we had a very healthy discussion about the how the present examination system is affecting the present education system in our country. And so we have we have discussed about how the effectiveness of the examination system in terms of the generation of employment, or the how it generates more flexibility in terms of thinking, or critical thinking, or the practical thinking also. So we have discussed all these things, and also we have discussed about the lack of flexibility also regarding the present examination system, and also with examples we have seen that. And also we have understood how important it is to conduct the examination in a fair manner, so that it is done in a equitable way. And also we have discussed about the how the exam system is putting unnecessary pressure on the student community, and also on society, the parents, and also we have come to a conclusion that instead of focusing on just on a single system, we need to have more comprehensive thinking, more inclusive thinking should be involved in that, and more evaluation should be done in that way. And also, rather than focusing on becoming just bookworms, we should have a more inclusive thinking also. So we have discussed about the ways how we can improve the examination system also. And I think all of us are confident that in future our system will improve. That will help our society in a better way. So thank you. कैसा था आज का टॉपिक? मुझे लगा बहुत फेमिलियर था, है ना? ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस निकल के आए सभी के. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Okay. चलो ठीक है. I'll start with the feedback. Okay. Guys, what I feel ना कि आप लोगों ने आज पॉइंट्स ना बहुत वैलिड दिए हैं, ठीक है? That were valid, but you just need to improve the content of yours. सभी को, ठीक है? आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं, पर उनको बोलना कैसे है? I always say please work on that. ठीक है? Let's say start with the शुभम. शुभम आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, ठीक है? When you were aware कि आपको इंट्रोडक्शन करना है, आप I think फर्स्ट टाइम कर रहे हो, चलो ठीक है. For that thing I एक्सक्लूड यू कि ठीक है आपका पहली बार था, आपने जीडीबी सेकंड अटेंड की है, बट मेक इट अ हैबिट कि जब आपको पता है दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, यू शुड हैव रिटन इट rather than जब आप बोल रहे हो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या बोलना है, अब क्या बोलना है. उससे पहले आप एक तो होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्वेश्चन आ गया है या अब हमें क्या बोलना है, बट यू आर अवेयर है, आपको पहले से पता है कि आपको ये चीजें बोलनी है, तो आपको वो चीजें रेडी रखनी चाहिए ना, राइट?
आपको अपने थॉट्स जो है ना वो बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे। बोलने से पहले 10 सेकंड पहले सोच लिया करो कि मुझे क्या बोलना है। इस वजह से क्या हो रहा है, आई विल गिव मोर एग्जांपल्स एज वेल। आप लोग बोलना कुछ चाहते हो बट बोल आप कुछ और देते हो, मतलब पॉइंट कुछ और है आपके माइंड में जो शायद मुझे समझ आ रहा है बट मे बी कोऑर्डिनेटर को वहां ना समझ आए, या मे बी समझ आए बट वो आपको इस पॉइंट के पॉइंट ना दे, because you were not able to express yourself. Are you getting my point? Yes, Same ma'am. thing is with Anand. Anand बोलना कुछ चाहता है, he has a point but he is not able to express. है ना Anand? So try to get clear in your mind before speaking. बोलने से पहले देख लिया करो, सोच लिया करो कि आप क्या कहना चाहते हो, उसको कैसे आपको फ्रेम करना है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करो, ठीक है। आई नो कि बहुत एकदम से नहीं हो जाएंगी चीजें, इट विल टेक टाइम बट प्लीज प्रैक्टिस इट। ये आप करोगे तो इट विल इम्प्रूव यू ओनली ना, ठीक है। उसके बाद अनुराग ने स्टार्ट किया रोट लर्निंग। अनुराग दैट वाज अ गुड पॉइंट और बहुत बेसिक पॉइंट भी था ये, ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट current education system or the current examination system is focusing on the rote learning. Then अंकित ने स्टार्ट किया lack of flexibility, critical thinking। ये वाला जो आपका पॉइंट था ना अंकित, आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते थे विद अ हेडिंग लाइक लिमिटेड असेसमेंट ऑफ स्किल्स, क्योंकि सिर्फ रोट लर्निंग ही है, सिर्फ वो रट्टे वाला चलता है कि भाई याद कर लो यही 10 क्वेश्चंस है या यही बुक का पैटर्न है। वहां पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, वो सब चीजें तो प्रोवाइड नहीं करता है। मैम वो मैं फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट बोला था, उसके अंदर ये सब किया था, हाँ। क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और एक लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। लैक ऑफ, या योर पॉइंट वाज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ना। यस मैम। हाँ, या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू कैन गो इट इन अनदर वे एज वेल। लिमिटेड असेसमेंट ऑफ स्किल्स, दैट इज योर चॉइस, बट हाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट। बिकॉज स्किल्स की लिमिटेशन है। एक बुक बना दी गई है कि आपको इसी में से लर्न करना है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इसी में से आंसर्स आएंगे, जिसका कि एक एग्जांपल भी दिया था राजू ने, राइट। उसके बाद नवीन ने स्टार्ट किया कि क्रिएटिंग बुक वॉर्म्स, ठीक है। राजू सेड कि कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज नहीं है, दैट इज मोर रिलेवेंट टू अंकित्स पॉइंट एज वेल। उसके बाद अजय ने स्टार्ट किया एजुकेशन सिस्टम बिकमिंग एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, आई गिव फीडबैक टू वन ऑन वन। शुभम, Anand, you both have to focus on your words, your content more, ठीक है। After that, Ajay and Raju, please try to speak in more confidence, और सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक करो गाइस प्लीज। बहुत बार ना आप लोग बहुत ज्यादा ऑडिबल नहीं होते हो, मतलब आई हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो। तो कुछ ब्रेकेज हो जाता है इंटरनेट का, वॉइस बहुत ऑडिबल नहीं होती है, ठीक है। एंड राजू, आई ऑलवेज नोटिस ना कि आप जो भी पॉइंट्स बोलते हो ना, यू ऑलवेज गिव एग्जांपल्स विद द नेम ऑफ पर्संस कि उन्होंने ये कहा था, फॉर दैट मैं नेम ऑफ पार्टीज, ठीक है। आई ऑलवेज से कि अगर आप श्योर हो ओनली देन यू आर गोइंग टू नेम दीज थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू नेम और टारगेट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। दिस टॉपिक वाज अ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर तो आपने पॉजिटिव फीडबैक में ही बोला है दैट यू गेव एग्जांपल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम और आई थिंक इन्फोसिस नारायण मूर्ति सर, सो इट वाज ऑल गुड, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि जो आपकी हैबिट है, अगर कुछ नेगेटिव टॉपिक होगा या आपको कुछ नेगेटिव एग्जांपल देना होगा और आप वहां पर किसी पर्सनल पर्सन टारगेट कर दोगे, सो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, ठीक है। अंकित, नवीन, अनुराग, आप लोग पॉइंट्स नोट करते हो दूसरे पर्सन के भी ना? यस मैम। हम सुनते हैं तो पॉइंट्स नोट करते हैं ना? यस मैम। आप लोगों को ना तीनों का मुझे एक चीज ठीक लगती है कि आप लोग ना अपनी अपॉर्चुनिटी ले लेते हो बोलने के लिए। जैसे आज फिश मार्केट बन गया था बीच में, है ना, बट स्टिल यू पीपल वर लाइक एबल टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक कि हाँ ठीक है अभी ये है तो मुझे यहाँ पर बोल देना है, ठीक है। दैट इज द गुड थिंग, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर कंटेंट एज वेल। पॉइंट्स आप जो बोलते हो सेम इज सेम, ठीक है। पॉइंट्स जो बोलते हो ना उनको ना पहले लिख लो, सोच लो कि उस पॉइंट में आपको क्या बोलना है, उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल क्या है, क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। एंड देन स्पीक, ठीक है।
अब जैसे कि आज का टॉपिक था, उसमें हमने सबसे पहले तो पॉइंट आप लोगों ने खुद ही बोल दिया था कि फोकस ऑन रोट लर्निंग। इससे क्या होता है, क्यों होता है ये? लिमिटेड असेसमेंट ऑफ स्किल्स, मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वही बुक वॉर्म्स वाला है, सब कुछ बुकिश है, ठीक है। एक और क्या पॉइंट हो सकता है इसकी वजह से, क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब एक ही एजुकेशन सिस्टम है या एक ही एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, बट दे नीड टू थिंक कि हर एक स्टूडेंट की लर्निंग और ग्रैबिंग पावर अलग अलग होती है, सबका पेस अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होते हैं, राइट, दैट इज मिसिंग। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो इसकी वजह से और क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही कम हो गया है सीखने में। दे आर नॉट इवन फोकसिंग, उनको पता है कि मतलब ये ठीक है, ये है, और जैसा कि एग्जांपल दिया था कि आजकल तो गाइड मिल जाती है, टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के, है ना, तो वो हमने पढ़ लिए और फिर हो गया। सो व्हाट इट इज कॉजिंग कि इंटरेस्ट कम हो रहा है स्टूडेंट्स का उस चीज में, ठीक है। क्यों हो रहा है ये भी? क्योंकि नैरो करिकुलम है, मतलब सिलेबस, स्किल, जो पढ़ाने की चीजें हैं वो बहुत लिड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, and that is just because of examination system, because it is not possible to give and like each and everything, right? क्या होता है इन सब चीजों से, और क्या, और एग्जामिनेशन सिस्टम से सोशल कंपैरिजन और कंपटीशन है, उससे क्या होता है, स्टूडेंट पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर और स्ट्रेस है, राइट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की कमी है, रिजल्ट्स पे ही सिर्फ फोकस है, रिजल्ट्स पे फोकस होने की वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी है, बायसनेस है, जॉब ओरिएंटेड सॉरी जॉब ओरिएंटेड सिंस चाइल्डहुड जॉब ओरिएंटेड है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो है ही नहीं है, राइट। ये सब वही पॉइंट्स है जो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ही वही हैं, शायद मैम, 2-4 पॉइंट्स ही होंगे जो आज मैंने न्यू ऐड किए हैं, राइट। मैम ये लैंग्वेज को इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? ये लैंग्वेज वाला मुझे भी पूछना था आपसे कि आप, आई थिंक किसने कहा था कि ये लैंग्वेज बैरियर है? अंकित नहीं कहा था, आप ही ने कहा था, हाँ। तो व्हाई यू फील कि लैंग्वेज बैरियर है? जहां तक मुझे पता है तो इंग्लिश का पेपर हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी का पेपर हम हिंदी में लिखते हैं, और जो जनरल सब्जेक्ट्स है मोस्ट ऑफ द स्कूल हैव चॉइसेस कि किस लैंग्वेज में चूज करना है। ओके, कॉम्पिटिटिव पेपर होता है हिंदी इंग्लिश डिजिटल लैंग्वेज में होता है, या ठीक है, क्लियर है अंकित अभी? यस मैम, ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन। या यस मैम, कैसे चला था फिर लास्ट में? ओके, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या हो सकता था इसका? शुभम सॉरी आनंद ने अगेन मतलब सभी पॉइंट्स ऐड कर दिए, बट आनंद सेम वही कि आप बोलना कुछ चाहते हो, बट वो जो सामने वाले को समझ आता है ना, आप फ्लो में कुछ बोलते चले जाते हो, सामने वाले को वो चीज समझ नहीं आती है ये, ठीक है। कंक्लूजन कैसे हो सकता था कि we have discussed a lot of things or lot of drawbacks of the current examination system, but as we know, no system is perfect. We can do a lot of things by just improving this system. हमने जेनरिक कर दिया, हमने उसको टोटली ऐसे डिसएग्री नहीं किया कि ये तो खराब ही है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, और हमने ये भी नहीं बोला कि ये फायदा वाला है या अच्छा है, ठीक है। हमने बोला दैट वी अग्री कि हाँ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बट येस एट द सेम टाइम by doing some changes or by evolving new methods we can also improve. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी तो डिस्कस किया ना कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी तो डिस्कस किए थे आप लोगों ने, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही खराब है ना? yes. और आज तो हमारे डिस्कशन, आई थिंक मैंने टॉपिक तो एक ही दिया था कि बैडली क्या इफेक्ट करता है। हमने तो इम्पैक्ट्स भी डिस्कस किए, हमने तो पॉजिटिव भी डिस्कस किया, हमने इम्प्रूवमेंट्स भी डिस्कस की। वो अलग बात है कि सब कुछ मिक्स कर दिया हमने, बट हमने तीनों चीजें डिस्कस की है पॉइंट्स को लेके। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग रियल इंटरव्यू में जाएंगे, मतलब रियल जीडी में जब जाएंगे, तो टॉपिक के बाद ना क्या कहते हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को, जैसे कि मतलब हम लोग को पहले टॉपिक मिल जाएगा फिर हम लोग को इंट्रोड्यूस करना होगा ना? या बिल्कुल, ओके, आप लोगों को पहले टॉपिक मिल जाएगा, फिर आप कोई भी इनिशिएटिव लेगा। जैसे मैं आप लोगों को पूछ लेती हूँ दैट हु इज गोइंग टू स्टार्ट, मे बी वहां पर कोऑर्डिनेटर पूछ ले कि हु इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इनिशिएटिव लिया करो। मैम उसमें क्या होता है, जैसे
पहले हम लोग बोल देंगे कि ठीक है हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन फिर टॉपिक ऐसा हो गया जिसके बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर उसमें कैसे? नो 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 नो, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है ना, आपको टॉपिक पहले रिवील कर दिया जाता है। ओके, ठीक है, क्योंकि टॉपिक रिवील कर देंगे, फिर आपको टाइम दे देंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड ऑल थिंग्स हैपन। ठीक है मैम, अगर टॉपिक जैसे दिया हुआ था आज हमारा कि हाउ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बैडली अफेक्टिंग प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ Yeah. बैडली दिया है, तो केवल हम इसके लाइक डिसएडवांटेज को ही वहां डिस्कस करेंगे रियल जीडी में, या हम उसके एडवांटेज? बिल्कुल नहीं, देखो उन्होंने आपको एक पहले ही एक डायरेक्शन दे दी है कि आपको इसके बैड इफेक्ट्स ही डिस्कस करने हैं। अगर उन्होंने इसको ऐसे बोला होता ना कि हाउ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज अफेक्टिंग करंट एजुकेशन सिस्टम, फिर आप लोगों के पास 2-3 डायरेक्शंस थी, आप उसको पॉजिटिव भी बोल सकते थे, नेगेटिव भी, बट इन्होंने तो आपको बोला ही है टारगेट करके कि आपको बैडली ही बताना है। ठीक है, तो कोई चांस ही नहीं उठता है कि आप उसके अच्छे पॉइंट्स बताओ या आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स बताओ, बट हाँ इम्प्रूवमेंट्स का आप एक बार फिर भी बोल सकते हो जब आपने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हाउ इट इज इफेक्टिंग बैडली। अभी भी आप लोगों के पास टाइम बचा है, सो आप कर सकते हो दैट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द बैड इफेक्ट्स and there is a solution to everything, so I want to add a new dimension to the topic, how we can solve or improve this thing. Yes. मैम वही जीडी थोड़ा लंबा अगर जाने लगता है तो फिर समझ में नहीं आता है पॉइंट, तो अगर दूसरे मतलब इम्प्रूवमेंट का भी बात करने लग जाते हैं। वो सही है या वो एक्चुअल जीडी में मैम वो कहीं अगर नहीं, एक्चुअल जीडी में वो सही नहीं है, बिकॉज हमें टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होना, इट इज कॉल्ड डाइग्रेशन, कि टॉपिक कुछ था अब हम कुछ और बोले जा रहे हैं। डजंट मैटर कि आपके पास पॉइंट्स नहीं है, डजंट मैटर आपको समझ नहीं आया टॉपिक, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें टॉपिक पे बोलना है। वी हैव टू गिव द क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। वो नेगेटिव मार्किंग में बैड इफेक्ट थे, तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कंक्लूजन थोड़ा मतलब गुड नोट पे ही होना चाहिए, तो फिर उसमें तो इम्प्रूवमेंट्स ही आने चाहिए ना, कि मतलब अब हमने बैड सारे बता दिए, अब एक दो इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर मान लो कि आप लोगों ने मान लो इम्प्रूवमेंट डिस्कस ही नहीं करी, आप सभी टीम ने पूरे टाइम ने उस टाइम पे सिर्फ बैड इफेक्ट्स ही डिस्कस किए, तो आप उसको कंक्लूजन में जनरेट कर दोगे ना गुड पॉइंट पे कि हाँ इसके बुरे पॉइंट्स हैं, सारी चीजें खराब हैं, बट या देयर इज आल्सो अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, करेक्ट, ये भी तो फिर एक पॉजिटिव नोट पे हो गया ना के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे कि नए जो भी जीडी टॉपिक हैं वो हम सर्च करके या उसको पढ़ के और उसको प्रैक्टिस करें। देखो सबसे आपके पास कितने सारे टॉप पॉइंट्स हैं, आपके पास टॉपिक आ रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं ना अभी जीडी में, ये एक्चुअल आज टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में जीडी हो चुकी है इन एग्जाम। ठीक है, ये सब वही टॉपिक है, आज का टॉपिक भी सेम वही था। ठीक है, अब आपके पास जैसे मैं आपको टॉपिक देती हूँ या कोई भी मेंटर आपको टॉपिक देता है, सबसे पहले आपके पास आपके खुद के पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है, उसके बाद आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके साथ 6 लोग और पार्टिसिपेट करते हैं, उन 6 लोगों के पॉइंट्स आपके पास हैं। जब जीडी कंप्लीट होता है, टॉपिक अभी भी आपके पास है, उसके ऊपर रिसर्च करो और पॉइंट्स निकालो, नोटबुक मेंटेन करो, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हर टॉपिक के आपको लिख के रखने हैं, अच्छे पॉइंट 10 अच्छे पॉइंट्स हर टॉपिक के आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, ताकि जब आप फाइनल जीडी में जाओगे, अगर आपको 3 बार भी चांस मिला है तो आप उन 10 में से 3 पॉइंट्स तो बोल सको, उन 10 में से आपको 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट याद रहेंगे ही ना। ठीक है,